मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आज का लेक्चर भी रिकॉर्ड करूँगा, बिकॉज कल मुझे बहुत प्रॉब्लम थी और मैंने पूरा 75 मिनट्स कंज्यूम नहीं किया था, जल्दी चला गया था. So yesterday's recording is there on the YouTube channel, my YouTube channel. लेकिन आज इंशाल्लाह मैं 75 मिनट्स कंज्यूम करूँगा एंड दिस विल बी अ मोर डिटेल लेक्चर. सो हो सकता है मैं उस पर डिलीट कर दूँ और आज का जो लेक्चर जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब ये. सो व्हेन वी टॉक अबाउट कंटिन्यूटी, can you see this page with the heading September 9, 2021? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अच्छा, जब हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो देर आर 3 मेजर एस्पेक्ट्स. एक तो ये कि हम फंक्शन कि कंप्लीट डोमेन पे कंटिन्यूटी की बात करें या ओवर एन इंटरवल लाइक ए बी या एट अ पॉइंट. ना ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जब मैं इनकी बात करता हूँ तो इसमें क्या फर्क है. कंटिन्यूटी इज डिफाइंड एट अ पॉइंट. और किस तरह से डिफाइंड? द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी is that f is continuous at x is equal to a if the limit x approaches a of fx is equal to value of the function. पहले लिमिट हमने इनका था इन जनरल ये जरूरी नहीं है कि बराबर हो लिमिट और वैल्यू. अब हम कह रहे हैं कि लिमिट और वैल्यू बराबर हो तो फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा ना. इस सेंटेंस का मतलब ये हो गया कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, दोनों लिमिट जो है आप एट एक्स इज इक्वल टू ए निकालेंगे और फिर आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे. अगर ये तीनों मिल गए तो फिर फंक्शन कंटिन्यूस. अगर इंटरवल के हर पॉइंट पे सिचुएशन हो तो कंटिन्यूटी एट एन इंटरवल का मतलब ये है कि आप इंटरवल ए से लेके बी तक फंक्शन का ग्राफ बनाएं. अगर इस ग्राफ में कहीं कोई गैप नहीं है तो वो कंटिन्यूस है. नो गैप ऑन ग्राफ तो कंटिन्यूस ओवर एन इंटरवल. एंड इसी तरह पूरे डोमेन पे अगर आप ग्राफ बनाएं तो कहीं कोई गैप ना हो. Now, different people interpret the term gap in different forms. अच्छा जी, गैप होने की कई सूरत हाल हो सकती हैं. एक हमने फंक्शन देखा था जो हर पॉइंट पे डिफाइंड था, एक पॉइंट पे डिफाइंड नहीं था, तो ये एक गैप आ गया. इस गैप को डिस्क्राइब करने के लिए आई कैन स्टेट गिव सम सच स्टेटमेंट कि अगर यहाँ से ग्राफ शुरू हो रहा है, मैं ग्राफ बनाना शुरू करूँ बट द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड हियर, तो मैं ग्राफ को कंटिन्यूसली नहीं बना सकता. मुझे यहाँ से पेन उठाना पड़ेगा और फिर इसके बाद रखना पड़ेगा और फिर इसी तरह वी कंसीडर some other examples. I can consider an example here like this and like this. So I draw the graph, but I have to lift my pen from here because the function is not defined here, it is defined here. तो अगर आप ग्राफ किसी इंटरवल पे या एंटायर डोमेन में ग्राफ बनाने के लिए किसी पॉइंट पे अपना पेन उठाना पड़े because the graph is not connected there, so that is not continuous. यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, वैल्यू नहीं है. यहाँ राइट
जी, somebody asking something? यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, वैल्यू ये है मगर वो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, सो ये लेफ्ट राइट कनेक्टेड है. So connectedness is an important thing, not left connected. यहाँ पे लेफ्ट से भी कनेक्टेड नहीं है, राइट से भी कनेक्टेड नहीं है. And we can consider these examples while discussing continuity. So that was important. These were the important things about limit and continuity that we discussed in the last lecture. And let us proceed further. Now I have talked about कि अगर लेफ्ट लिमिट और फंक्शन वैल्यू सेम है तो हम उसको लेफ्ट कंटिन्यूस कहते हैं. अगर राइट लिमिट और फंक्शन वैल्यू सेम है तो उसको हम राइट कंटिन्यूस कहते हैं. The function is said to be continuous at x equal to a if the graph of the function is connected at the point a f a from both sides, यानी लेफ्ट से भी कनेक्टेड हो और राइट से भी कनेक्टेड हो. But when function is discontinuous at some point, अब value of the function, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, इन तीन में से कम एक चीज डिफरेंट होगी. इन जनरल अ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट अ पॉइंट if its graph is disconnected. What are the possibilities? Discontinuous from left, इसका मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन लेफ्ट लिमिट के बराबर नहीं. डिसकंटिन्यूअस और डिस्कनेक्टेड फ्रॉम राइट, इसका मतलब है राइट लिमिट और फंक्शन वैल्यू बराबर नहीं. डिसकंटिन्यूअस और डिस्कनेक्टेड फ्रॉम आइदर साइड, इसका मतलब है फंक्शन वैल्यू ना तो लेफ्ट लिमिट के बराबर है ना राइट लिमिट के बराबर है. इट मीन्स ऑल थ्री आर डिफरेंट. एक डिसकंटिन्यूटी है जिसको हम कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, और इसमें फंक्शन वैल्यू डिफाइन होती है लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के बराबर होती है, मगर जो लिमिट है वो फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल मैं ने जो ये अभी एक दो पॉसिबिलिटी डिस्कस की, ये वाली, इसमें वो वाला केस है. ग्राफ तो एक्जेक्टली वो नहीं है. लिमिट x अप्रोचेस 2 of x cube minus 8 upon x minus 2. तो ये फंक्शन हर पॉइंट पे डिफाइंड है मगर x इक्वल टू 2 पे डिफाइंड नहीं. तो अगर मैं इस फंक्शन की डेफिनेशन ये लिखूं, x cube minus 8 divided by x minus 2 for each x not equal to 2 but is equal to 5 for when x is equal to 2. इसका फंक्शन की वैल्यू है, लेकिन हम देख चुके हैं कि लिमिट x approaches 2 of this function x cube minus 8 upon x minus 2, this is equal to 8. उसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा जिस हमने लास्ट टाइम not equal to function value. What is the function value at 2? This. So this is a case of removable discontinuity. Removable in what sense? ये फंक्शन मैंने जबरदस्ती डिफाइन किया हुआ था. एक्चुअल फंक्शन तो ये था जो कि एक्सक्लूड 2 पे डिफाइन नहीं है, मैंने एक्सक्लूड 2 पे जबरदस्ती डिफाइन किया. तो जो मैंने जबरदस्ती डिफाइन किया वो अप्रोप्रिएटली कर दूं. तो नॉट कंटिन्यूअस, और यहाँ जो नॉट कंटिन्यूअस है ये डिसकंटिन्यूटी जो है ये रिमूवेबल है रीडिफाइंड फंक्शन. तो fx is equal to x cube minus 8 upon x minus 2 for each x not equal to 2 and is equal to 8 when x is equal to 2. अब आप जब लिमिट निकालेंगे अपने क्लासिकल मेथड से निकालेंगे, फैक्टराइज करके x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4
डिवाइडेड बाई x माइनस टू, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू कट गया, x की जगह 2 रखा, 4 4 4, ओह सॉरी ये तो 12 आ गया, ये मैंने गलत लिखा था। तो स्टिल दिस इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो अब अगर मुझे इसको कंटिन्यूस बनाना है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जो लिमिट ऑफ द फंक्शन है वही वैल्यू ऑफ द फंक्शन बनाते हैं। अब वो जो गैप था, जो एक्स इक्वल टू पे फंक्शन डिफाइन नहीं था, हमने यहाँ डिफाइन किया, लेकिन ऐसा डिफाइन किया कि गैप अभी बाकी है, यानी फंक्शन वैल्यू और फंक्शन लिमिट सेम नहीं है। अगर हम फंक्शन वैल्यू वही कंसीडर कर लें जो लिमिट है, तो फिर वो गैप फिल हो जाता है, एंड दैट इज द सेंस ऑफ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। So when do we have a removable discontinuity? When function value exists, but uh, exists or but the limit exists. Function value exists or not. The limit exists. इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, एंड इट में नॉट बी इक्वल टू, हो सकता है फंक्शन वैल्यू डिफाइन भी ना हो, तो हम डिफाइन कर फॉर कंटिन्यूस फंक्शंस। आपने इस तरह की चीज़ें पढ़ी होंगी कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनका सम भी कंटिन्यूस होगा, डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा, प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा, क्वोशंट भी कंटिन्यूस होगा, इन केस डिनोमिनेटर जो है एट द पॉइंट अंडर स्क्रूटनी, जहाँ पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, वहाँ पे वो जीरो ना। फिर आपने ऐसी ग्राफिकल प्रॉब्लम्स भी देखी होंगी जिसके जरिए आप लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, फॉर एग्जाम्पल इस फिगर के अंदर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट -2, इस ग्राफ को रीड करके कोई बता सकता है कि इसकी वैल्यू एट एक्स -2 क्या है? -1. फ्रॉम वेयर डिड यू रीड इट? एक्स -2 ये है, -1 पे तो होल है। सर -0.5 भी हो सकती है। ये मेरी स्क्रीन पता नहीं कहाँ गायब हो गई। जी, somebody is saying कि -0.5 भी हो सकती है, कैसे? x is equal to -2 is this. What's the y value correspondingly? तुम्हें कुछ मुश्किल हो रही है? What about f of 3? This is 3. X is equal to 3. What's the corresponding value of y on the graph? किस हाइट पे है ग्राफ? 4. Yes. अब बताओ x is equal to -2 पे कितनी डेप्थ पे है ग्राफ? सर नेगेटिव इन्फिनिटी में जा रहा है। नेगेटिव इन्फिनिटी को जा रहा है। ये वैल्यू नहीं है इसकी, हमने ऐसे ही लिख दिया है बात समझने के लिए। In fact, this is not it. It is the limit x approaches -2 from left hand side of the function is equal to -infinity, and limit x approaches -2 from the right hand side
अगर राइट साइड से ग्राफ पे ट्रेवल करते हुए x इक्वल टू -2 पे आओगे तब तुम लेवल -2 पे पहुंचोगे हाइट के, -1 पे। वेयरएज यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 आएगी, राइट हैंड लिमिट भी 4 आएगी। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट is equal to 4 is equal to f of 3. Here it is left hand limit not equal to right hand limit. So this here it is discontinuous. Here it is continuous. Here the graph is connected from both sides. It is not connected from both sides here. So this is the topic. अभी तक मैं पिछला लेक्चर ही रिवाइज कर रहा था और the topic that I have to discuss today is derivability. The last concept, derivability or differentiability and its associated properties. जिसके बाद मैं integration, that is an essential part of this. अच्छा, कुछ स्टूडेंट इस बारे में कंफ्यूज हैं कि आजकल जो हमने ये रिव्यू पढ़ा है तो इस कहाँ से पढ़े हैं, तो मैंने कहा अभी किसी भी किताब में ये सब कुछ मौजूद है। इस जो कुछ आपने पढ़ा है इसको पकड़ करने के लिए मैं एक असाइनमेंट आज रात अपलोड करूँगा। होपफुली माय टीए विल sort of help you with that in the sense कि अगर आपको कुछ दुश्वारियाँ हों आप कंसल्ट कर सकते हैं उनसे, और टारगेट भी आपको टीए सेट करके देंगे कि आप अपना सोल्यूशन कब सबमिट करें। How to submit the solution, I'll discuss it with the uploading of assignment instructions के साथ। Now, when do we say a function is derivable? Just like a definition of limit, हमारे पास एक complicated statement था, यहाँ पे उतना complicated statement तो नहीं है। We say that the function is derivable or differentiable at x equal to a if the following limit exists. ये limit किस चीज की है? fx, when we write down x approaches a means x is close to a, and that simply means it may be close from left hand side or from right hand side. When x is close to a, the difference of fx and the value of the function at x equal to a, that means by the sign of the definition, the function should be defined at x equal to a. If I'm considering fx is equal to as simple as x square, and I want its derivability at x equal to 2. What does this definition say? कि मैं fx माइनस fa बनाऊं, इसका मतलब मेरा पहला स्टेप क्या होगा? I focus on what is fx. Then I focus on what is function value at 2. Then I need to think about what is the difference between fx and f2. So fx है x square और f2 है 4. Then what is x minus 2? X minus 2, so x minus 2 है. From all this, we make an expression, what? fx minus a, fa divided by x minus a. So x minus a is x minus 2. So x square is fx, f2 is 4, x minus a is x minus 2. और अब इसकी लिमिट निकालनी है। जब मैं इस तरह के एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा था लिमिट के लिए,
तो कुछ ना कुछ जाना में सवाल जरूर आता था, यार ये फंक्शन क्यों हम इसकी लिमिट निकाल रहे हैं जो कि x=2 पे डिफाइन ही नहीं है। नहीं, ये खास किस्म का फंक्शन है। ये फंक्शन कहाँ अपीयर होता है, जब मैं किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करता हूँ, और वो भी किसके जरिए, लिमिट x अप्रोचेस a ऑफ f(x) माइनस fa डिवाइडेड बाई x माइनस a। इस वजह से ये सवाल वहां डिस्कस हो रहा था। तो अब हमें लिमिट, अगर मुझे ये देखना है कि ये फंक्शन डिराइवेबल है या नहीं है, इफ दिस लिमिट exists, then f(x) is equal to x square is derivable at x is equal to a या x is equal to 2। तो मुझे ये बनाने के लिए, वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए जिसकी लिमिट डेरिवेटिव होती है, जिसकी नोटेशन में इस्तेमाल करता हूँ आमतौर पे एफ प्राइम एट ए या डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एट एक्स इक्वल टू ए, वो इस लिमिट का नाम है। तो जब भी लिमिट निकालनी है, यानी पहला लेसन तो ये है कि जब मैं डेरिवेटिव ये देखना चाहता हूँ कि एक फंक्शन किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाला जा सकता है नहीं निकाल सकता, तो मैं ये वाली लिमिट एक्सप्लोर करूंगा। आपने तो बहुत सारे डेरिवेटिव सीख लिए ना। हाँ भाई, एक्स के ऊपर डेरिवेटिव क्या है, जल्दी से बताओ। 3x2 3x स्क्वायर, एक्स पावर 1/2 का डेरिवेटिव क्या है, 1/2 रूट एक्स। जी प्लीज दोबारा बोल दीजिए। हाफ एक्स टू द हाफ पावर एक्स टू द पावर -1/2। सही। तो आपके पास क्या है, रूल है पावर मल्टीप्लाइड एक्स पावर डिक्रीज्ड, यानी एक्स पावर n इज इक्वल टू n एक्स पावर n-1। मैं कभी इसको प्रूव करने की कोशिश की, so such definitions are used to prove things like this। हाँ भाई, what's the derivative of sin x? cos x। Cos x। What's the derivative of cos x? माइनस साइन एक्स। Good। बट कभी इसको प्रूव करने की कोशिश की? A major student has to learn all these। तो मैं इसकी तफसीलात पे नहीं जाऊंगा, लेकिन वो मेथोडोलॉजी जरूर डिस्कस करूंगा जिसको हम इस्तेमाल करें। ना दिस लिमिट जो मैं डिस्कस कर रहा था कि जिसको कि हम कहते हैं कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती तो फंक्शन डिराइवेबल होगा, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ। क्यों? हमने कहा था x इज क्लोज टू a। तो अब x अगर क्लोज टू a है तो x कैन बी a प्लस एच यानी राइट साइड पे, और x कैन बी a माइनस एच यानी लेफ्ट साइड पे। आपको याद दिला दूं, डेल्टा, एप्सिलॉन और h, ये 3 लेटर नोटेशंस हैं जो हम स्मॉल नंबर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी हम कहते हैं कि x इज क्लोज टू a, तो हम या तो a प्लस एच, और ये सब के सब पॉजिटिव होते हैं, a प्लस एच राइट पे होगा, a माइनस एच लेफ्ट पे। तो x की जगह a प्लस एच या a माइनस एच रखते हैं। तो जब x की जगह इनमें से कुछ रखोगे, a प्लस माइनस एच आ गया x की जगह, माइनस ए कट गया, डिनोमिनेटर बचेगा प्लस माइनस एच। इसमें प्लस वाला जो है वो राइट हैंड साइड की लिमिट होगी, तो इसका मतलब है प्लस वाला इस्तेमाल करेंगे तो हम उसको राइट हैंड डेरिवेटिव
लेफ्ट वाला इस्तेमाल करेंगे तो नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे और उसको हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहेंगे। Now the function is derivable or differentiable at x equal to a if the limit exists। इसका मतलब है चाहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो चाहे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, the value or the limit should be same। So we note that in order that a function is derivable at x equal to a, एक चीज function must be defined क्योंकि हमने fa इस्तेमाल किया है हर लिमिट में। बेसिक डेफिनेशन में जो लिमिट बात कर चुका, फंक्शन का ए पे डिफाइन होना जरूरी है, न सिर्फ ए पे डिफाइन होना जरूरी है बल्कि we'll see that इसका कंटिन्यूस होना भी जरूरी है। Let us see a function and explore whether it is differentiable or not। ये फंक्शन है। I hope you have some experience of defining functions piecewise। है भाई? piecewise functions define किए हैं ना, यूज किए हैं ना? Any response? सर सुना हुआ याद नहीं आ रहा। सुना हुआ याद नहीं आ रहा। चलो मैं स्क्रैच से शुरू करता हूँ। mod x तो देखा था। Now what the mod function does with the input? If the input is positive, it will keep it as it is, even if it is 0. But if the input is negative, you get minus x. That means it's made of two functions. एक है y is equal to x for each x positive or 0, or y is equal to minus x for each x less than 0. And when you try to make the graph of such a function, what happens? First part, to the x is equal to 0 and to the right side, it is a straight line with slope 1 and y-intercept 0. ठीक है? On the left of x equal to 0, what happens? When x is negative, you multiply the negative number with negative so that it becomes positive, and this branch here will have a graph of this type. So this is the graph of line y is equal to x, and this is the graph of line y is equal to minus x, because slope is minus 1 and y-intercept is 0. So ये y piecewise function, simplest piecewise function ये हो गया। So there I had a function, जिस तरह का भी था मैं उसी तरह का एक और फंक्शन बना रहा था, 2x minus 1 for each x greater than or equal to 2 and is equal to 3 minus 3x plus 9 for each x less than 2। कैसे बना दिया मैंने? अरे भाई, यहाँ तो मैं एक जान पहचान के फंक्शन से बात शुरू की थी और मैंने इसके दो पीसेस डिफाइन करके दिखाए थे। अब ये पता नहीं कोई सिचुएशन होगी, it may have come out of somewhere in some practical problem। Have you studied anywhere the tax formula? The formula that is used to calculate income tax? Yeah, Ahlul Mashiyat. Oh, my people of economics. Yes sir। टैक्स फार्मूला देखा है ना? एक लेवल है इनकम का जहां तक के तकरीबन हर मुल्क में टैक्स माफ होता है, कुछ कोई टैक्स नहीं देना। Then there is a next slab and you have to pay a certain percentage of the income above the
exempted amount. तो वो pieces में define होता है function. Anyways, I can consider many other examples, but right now मैंने एक student of mathematics एक piecewise function लिखा. अब मैं इसका ग्राफ विजुअलाइज करने की कोशिश करूँ और इसको रिलेट करूंगा कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट x equal to 2 और derivability of f at x equal to 2 इन दो चीजों से. So first I make the graph. अभी मैं वो definitions और ये method और formula कुछ नहीं, मैं सिर्फ ग्राफ से डिस्कस करूँ. y is equal to on this side it is y is equal to 2x minus 1. तो इज इक्वल टू 2 है यहाँ पे, तो x इक्वल टू 2 पे क्या आउटपुट बनेगा यहाँ से? हेलो. Yes, sir. Can you repeat what were you saying? फॉर x इक्वल टू ये फॉर्मूला मुझे क्या वैल्यू देगा y की? Sir, 3. 3. 3. So I consider a point with coordinates 2, 3, and to the right of that, it's a straight line that has a slope 2 and rising above very rapidly. Acha ji. On the left of x equal to 2, what's the formula I have to use? I have to use y is equal to minus 3 plus 9. Now x is not equal to 2 for this formula. I cannot use or I should not use. मगर थोड़ी देर के लिए हम इग्नोर मारते हैं और कहते हैं x equal to 2 इस्तेमाल करते हैं and see what's the value of this. Sir, 6. Again 3. So अगर ये फंक्शन x equal to 2 पे ये रूल होता आउटपुट निकालने का, तब भी 3 आता. And from there -3 स्लोप की लाइन लेफ्ट साइड पर है and it's a larger slope, so it goes to meet y-axis at 9. So this is the graph. So this line represents y is equal to 2x minus 1. This line represents y is equal to minus 3x plus 9. Now we have seen that what is f2? Well, while we considered x equal to 2 in this formula, so 2 into 2 minus 1 is equal to 3. Graphically, we can see that limit x approaches 2 from left hand side of the function. तो ग्राफ पे टहलते हुए आप आए x equal to 2 के करीब, तो y वैल्यूज किस नंबर की तरफ जा रही हैं? That is 3. And same is the case if you travel on the graph from right hand side and the y values are coming down to 3 again. Now these things tell you that f is continuous at x equal to 2. So you don't have a gap. Gap अगर नहीं है तो function continuous है. Gap है तो function discontinuous है. But my question was something else. When I talk about derivative. So let us consider the same problem for derivability. Can I take the derivative of this function at x equal to 2? तो जब मैं derivability का question raise करता हूं, तो what I actually mean? I mean that I look for this limit. X approaches 2 of fx minus f of 2 divided by x minus 2. F of 2 I have available here. So to evaluate this limit, I use fx minus, 3. F2 is 3 divided by x minus 2.
Now it remains to be seen that what happens if I go from left side towards 2. So limit x approaches 2 from left hand side fx minus 3 divided by x minus 2. Now what happens on the left hand side? Left hand side पे function जो है that is behaving like this. So limit x approaches 2 from left hand side fx की जगह what I'm going to use minus 3x plus 9 minus f2 की जगह 3 divided by x minus 2. So limit x approaches 2 from left hand side of, let us try to simplify this as much as possible. Doesn't simplify too much, but we keep on trying. 3 minus 3 plus 9 6 हो गए, minus 3 कॉमन निकाल लिया, so x minus 2 बचा, because this is 6, minus 3 कॉमन निकालोगे तो x minus 2 आएगा. नीचे क्या हुआ? नीचे x minus 2 है, x minus 2 कट गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकल के आ गया -3. Let me look at the right hand derivative of fx minus f2 divided by x minus 2, for which I will work on the right hand side, and on the right hand side the formula for function was what? 2x minus 1. So 2x minus 1 minus what was the function value? That was 3 at x equal to 2. So 3 आ गया divided by x minus 2 आ गया. So limit x approaches 2 from the right hand side. And we have 2x minus 4 upon x minus 2, which can be simplified to obtain the limit. 2 taken common, x minus 2 divided by x minus 2, x minus 2 to cancel, and you have the right hand derivative equal to 2. How many of you are familiar with the idea that the derivative represent the slope of the tangent to the curve? Any response? Yes, sir, we've done it. Huh? जी सर, पता ही बात. पता है ना ये बात? So let us see what happens. What has happened? What's the slope of the line that represents the function on the right hand side of x equal to 2? What is the slope of the line that represents the function on the right hand side of x equal to 2? This is the line. What is the slope of this? 2. On the left hand side, this is the line which represents the function on the left hand side of x equal to 2. What's the slope? यहाँ पे 2 आपने recognize कर दिया, या 3. minus 3. Minus 3. Right? And what is the right hand derivative? The slope on the right side. What is the left hand derivative? Slope on the left side. So limiting process ये बता रहा है कि if you travel along the graph on the right hand side towards x equal to 2, what shall be the value of the slope of the tangent? It will always remain 2. चाहे आप x के कितने ही करीब क्यों ना हो, but x equal to 2 के कितने ही करीब क्यों ना हो, but not x is equal to 2. Derivative is a limit. So you don't go to x is equal to 2.
You go close to x equal to 2. So close to x equal to 2, it will remain, the slope will remain 2. So right hand derivative is 2. Similarly, on the left hand side, आप चाहे x equal to 2 के कितने करीब क्यों ना हो, slope will remain -3. So the left hand derivative is -3. अब आप सोचेंगे भाई ये तो मसला ऐसा है कि straight lines थी, so we can consider other problems also. अच्छा, the function was continuous. There was no gap. Is the function derivable? Left hand derivative is not equal to right hand derivative. This means given function is not derivable or differentiable at x equal to 2. तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है, लेकिन हो सकता है डिराइवेबल ना। लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डेफिनेटली डिराइवेबल नहीं। So for example, I consider fx is equal to x square minus 1 for each x greater than or equal to 1, and x square plus 1 for each x less than 1. Now we have a graph function. उसको 0 कर दो, 0 के above. Now you know that y is equal to x square is a parabola opening upward. X square minus 1 से ग्राफ नीचे चला जाएगा, x square plus 1 से ग्राफ ऊपर चला जाएगा. So when x is equal to 0, it will be -1, and then the parabola goes like this. When x is equal to 0, अगर ले लें आप तो ये -1 connected नहीं है, लेकिन then the graph is opening upward. I have made a mistake. When I talk about this right side, left side of x equal to 0, when x equal to 0, if it is, then the value of this function will be +1. There is a hole at +1 because we don't have x equal to 0 for this part. So the graph will be like this. It will be a polar parabola coming upwards, almost reflection of this, but vertically displaced from each other. So now I'm talking about x square plus 1 for each x greater than or equal to 0, x square minus 1 for each x less than 0. अगर आपको कोई कहे कि यार डायरेक्टली डेरिवेटिव निकाल लो, I hope all of you can find out dy by dx. What's the derivative of this function? 2x. X. किसके लिए? X is greater than For 0. each x greater than or equal to 0. What about the derivative of this function? 2x. Same. 2x. For what values of x? Less than 0. Now, do you think the derivative, the function is derivable? Do you really think the function is derivable now? Confused? No. If you are confused, let me tell you, this is, अच्छा चलो ये तो बता दो, is this function continuous at x equal to 0? No. I hope you get this point that this function is not continuous because graph is not connected at x equal to 0. अगर function continuous ना हो तो it cannot be
derivable. Sir, At but x is equal to it won't be derivable only at x is equal to 0, right? But बाकी G. सब में तो काफी सारे points Otherwise, रहते हैं I'm not talking about मैंने कंटिन्यूटी की बात तो कंप्लीट डोमेन पे भी की थी, कंटिन्यूटी की बात मैंने इंटरवल पे भी की थी और एक पॉइंट पे भी की थी, मगर डिराइवेबिलिटी की बात अभी मैं सिर्फ एक ही पॉइंट पे कर रहा हूँ, राइट? So your comment that it is not derivable at x equal to 0, otherwise ये derivable होगा, लेकिन मैं at x equal to 0 की बात कर रहा हूँ। बज़ाहिर ये जो रिजल्ट हैं ये हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। हमने एक जनरल स्टेटमेंट दिया हुआ है जिससे जो कि एक थ्योरम है और हम इसको प्रूव कर सकते हैं, फाइनल फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस, इट कैन नॉट बी डेराइवेबल। बट बाद वक़्त कुछ प्रूफ्स ऐसे होते हैं जो बाय एग्जांपल भी किए जा सकते हैं। हमें ये क्यों कंफ्यूज कर रहा है? हमें ये इसलिए कंफ्यूज कर रहा है कि हमने ये फंक्शन लिया मगर डिराइवेबिलिटी की जो बेसिक डिमांड थी वो थी कि ये लिमिट एग्जिस्ट करे। हमने इसको तो एक्सप्लोर ही नहीं किया। So when you have to explore that a function is derivable at some point, then we have to explore the limit x approaches 0 of fx minus f0 divided by x minus 0, because अब मेरे पास एक ही जगह 0 है। Now f0, we forget about this. We concentrate back on the original function. The original function says what? What's the value of the function at x equal to 0? Would I use this formula or this formula? Upper one. Upper one, because x is equal to 0 is there. So 0 square plus 1 is 1. So now this limit formula changes to fx minus 1 divided by x. And then I start thinking about left hand and the right hand approach. So left hand derivative, and that means limit x approaches 0 from left hand side. So to the left hand side of 0, the behavior of the function is x square plus 1. The right hand side of the 0, the behavior of the function is x square minus 1. Behavior means formula that I have to use to find the value, output values y. तो fx की जगह लेफ्ट हैंड साइड पर मैं इस्तेमाल करूंगा x स्क्वायर प्लस 1, fx की जगह आ गया, माइनस 1 जो है वो f of 0 की जगह आ गया अपॉन x. So this cancel out, it simplifies to x square upon x, that means simply x, and when x is very, very close to 0, this will be 0. So left hand derivative has come out to be, now did I do any mistake here? No, I didn't. Let us work out the right hand derivative. That means the limit x approaches 0 from right side. On the right side, what's the formula to be used in place of fx? Upper one. X square minus 1. X square minus 1, lower one, right side one. So ये आ गया in place of fx. Y. This is the y for the right hand side of x is equal to 0. अबे गड़बड़ की है ना, मैं कह रहा हूँ कहीं कुछ मैंने गड़बड़ की. Here this is the left hand side, not included. This is the right hand side. Now this is according to the graph. So left hand side हमने x square plus 1 इस्तेमाल कर लिया, right hand side x square minus 1 इस्तेमाल कर लिया. Function value
फंक्शन वैल्यू जो है वो हमने पहले से निकाल के रखी हुई है, वो है इसके हिसाब से। हाँ देखा ना, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन वैल्यू जो आएगी वो इसके हिसाब से आएगी। कुछ गड़बड़ हो गई आज मेरे साथ। सो दैट मीन्स फंक्शन वैल्यू is -1. So fx on the left hand side is x square plus 1 minus of -1 divided by x, and that makes limit x approaches 0 of x square minus 1 plus 1 x. Now this limit is a big question, whereas I'll come back to this. राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते वक्त जब हमने काम किया तो वो ये हुआ, so limit x approaches 0 from the right hand side, x square minus 1 minus minus plus divided by x, this cancelled, x square upon x plus x cancel, and this is 0. Now this right hand derivative exists, left hand derivative came out to be this limit x approaches 0 of x square plus 2 upon x. Now, what do you say? What kind of method you will be using to find this limit? अगर मैं directly x is equal to 0 को इस्तेमाल करूं तो numerator will be something like 0 plus 2, यानी very small number plus 2 divided by very small number, and this goes to what? 2 upon 0 becomes what? Undefined. Infinity. Infinity. Is it justified? Is it, does it appeal to our confidence? It does, because as you come from left hand side, the function values are here. But the function values में से जो चीज subtract हो रही है वो क्या subtract हो रही है? -1 subtract हो रहा है. So this is the variation in y. And what about the variation in x? Variation in x मैंने दोनों साइड बना दिया, हालांकि एक साइड पे ही है, लेफ्ट साइड पे. That is very very small, but delta y is almost 2. So delta y 2 है और delta x goes to 0. This is what is appearing here. डेल्टा वाई न्यूमिनेटर में जो है ये डेल्टा वाई आ रहा है और डिनोमिनेटर में जो है वो डेल्टा एक्स आ रहा है. तो न्यूमिनेटर जो है उसमें 2 स्टेप्स का डिफरेंस है, बट डिनोमिनेटर जो है वो 0 की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इनफिनिट आ गया. एंड वी कंक्लूड दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. नाउ व्हाट वी वर डूइंग, आवर फर्स्ट एग्जांपल was about a function which was continuous at some point. Still, it was not derivable because the left hand and right hand slopes were different. Then we consider an example in which the function is not continuous, and due to this discontinuity, we have what problem? कि एक साइड से जहां से कि कनेक्टेड था वहां से तो आपको स्लोप ऑफ यहाँ पे when you come very close, the slope will become horizontal. Tangent will become horizontal and slope is 0. But from the left hand side, the variation in y is of 2 steps, and variation in x becomes very small, so that goes to infinity. So even if when the function is not continuous, it's not going to be differentiable. अब यहाँ पे जो है मैं चाहूंगा ये वाली एग्जाम्पल आप लोग खुद एक्सप्लोर करें. बस इतना बता दूं कि ये ग्राफ गलत बना हुआ है और मैंने वर्किंग यहाँ पे एच के की जगह करके दिखाई दी है.
यानी जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे काम करूंगा तो x इज इक्वल टू 2 माइनस एच लूंगा, और राइट साइड पे काम करूंगा तो 2 प्लस एच लूंगा, और उसके जरिए मैंने एग्जाम्पल की भी है। और यहाँ भी ये फंक्शन कंटिन्यूस है लेकिन डिराइवेबल नहीं है, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। Now the same limit expression can be modified. A replaced by x, x replaced by x plus delta x minus a replaced by delta x. So fx की जगह fx plus delta x आ गया, fa की जगह fx आ गया, x minus a की जगह delta x आ गया, x approaches 0, delta x approaches 0, x approaches a, delta x approaches 0. So ये यही लिमिट जो है जिसको कि हम डेरिवेटिव x equal to a कह रहे हैं, वो ऐसे भी लिखी जा सकती है। And this forms what you may have studied as the first principle of derivative. Did you ever heard about this term? First principle of finding derivative? मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था what's the derivative of x cube? आप सब लोग ने जवाब दे दिया था। क्या जवाब है भाई? 3x square. 3x स्क्वायर। अच्छा भाई, अभी हमने कहा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 ऑफ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स. So what is fx in our discussion? Our फंक्शन जिसका डेरिवेटिव हमने निकाला है वो एक्स क्यूब है, लेकिन अगर मैं x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स रख दूं तो अब एक्स क्यूब की जगह x प्लस डेल्टा एक्स क्यूब आ जाएगा, और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स जो कि डेल्टा वाई है एफ एक्स इनफैक्ट is x plus delta x raised to power 3 minus x cube. इसको अलजेब्रिकली मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डेल्टा x प्लस 3x डेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा x क्यूब माइनस x क्यूब और x क्यूब कट गया, and I have now टर्म्स ओनली इन्वॉल्विंग डेल्टा एक्स, जिनमें से एक डेल्टा एक्स में अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो बाकी बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 3x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर. अगर मैं इस एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दूं तो इसका मतलब होगा कि डेल्टा एक्स 3x स्क्वायर प्लस 3x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स क्या हो गया? दिस इज